Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to lecture number 9 for Global Business Management. And this is the continuation of chapter number 4. And today I will discuss about the implications for managers with reference to ethical behavior. Let's try to identify and understand क्या implications आ सकती हैं एक मैनेजर को ethically behave करने में, hiring and promotion of the staff workforce, चाहे वो managerial level पे या non-managerial level पे है. So business should strive to identify and hire people with a strong sense of personal ethics. In theory, yes, this is true. But ground realities dictate कि यहाँ पे भी जो HR department है वो compromise हो जाता है. बहुत सारे रीजंस हैं कि वो इंटरनल इन्फ्लुएंसेस हैं या एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस उसको इन्फोर्स करने की कोशिश करते हैं. जिस माशरे में जिस कल्चर का हम हिस्सा वहाँ पे नज़र आता है कि टाइम्स मेरिट को बाईपास किया जाता है. जब भी आप मेरिट को बाईपास करेंगे तो आपने स्टार्ट से ही कंप्रोमाइज़ शुरू कर दिया है. और जब आप स्टार्ट से कंप्रोमाइज़ शुरू कर देते हैं तो इट मीन्स कि फिर आप जो इंडिविजुअल्स हायर कर रहे हैं दैट इज सेकेंडरी के इधर दे हैव स्ट्रॉन्ग पर्सनल एथिक्स और नॉट, तो वो फिर एक सब्जेक्टिव टर्म हो जाती है. मे बी यू आर लकी इनफ कि जो आपने मेरिट को बाईपास करके भी लोग हायर किए हैं दे आर मॉरली नॉट करप्ट, या वाइस वर्सा भी हो सकता है. तो जो पोटेंशियल एम्प्लॉयज शुड फाइंड आउट एज मच एज दे कैन अबाउट द एथिकल क्लाइमेट इन एन ऑर्गेनाइजेशन. सो दिस इज टू प्रॉन अप्रोच, जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ढूंढ रही है potential employees को, वहाँ पे जो job seekers हैं they should also invest some time and energy to identify the work environment of the organization जहाँ पे वो हिस्सा बनने जा रहे हैं जिस organization का. कल्चर एंड लीडरशिप जो है ये दोनों को एग्जिस्ट करते हैं, दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं. एट टाइम्स जो है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर जो है वो लीडरशिप को मोल्ड कर लेते हैं, एंड एट टाइम्स अदर टाइम्स लीडरशिप जो है वो पर्सनल गेन्स के लिए ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को डिस्टर्ब एंड डिस्ट्रॉय भी कर सकती है. But businesses needs to build an organizational culture that places a high value on ethical behavior of every member of the workforce, regardless of the position or the designation one holds within a workforce of an organization. So business must explicitly articulate values that place a strong emphasis on ethical behavior of employees within the domain of an organization. And that can be ensured through code of ethics, which is a formal statement of ethics or prioritize a business adheres to and expects its workforce to follow it. Our leaders in the business should give life and meaning to the code of ethics by repeatedly emphasizing their importance and then act on them. So personally खुद demonstrate करना पड़ेगा through practice, and then आप expect कर सकते हैं subordinates की तो वो भी इसको follow करें. The business should put in place a system of incentives and rewards that recognize people who engage in ethical behavior within the organization. So ये rewards जो हैं monetary भी हो सकते हैं और non-monetary भी हो सकते हैं, and sanctions those who do not follow these ethics. Another crucial element जिसके लिए management को कंसिडर करना चाहिए दैट इसके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या है. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर आपकी मैनेजमेंट फिलॉसफी इज ब्यूरोक्रेटिक इन नेचर, ऑटोक्रेटिक है या मैकेनिस्टिक अप्रोच है, तो वहाँ पे आप इंक्लूसिवनेस की बात नहीं करेंगे, वहाँ पे आप एक्सक्लूसिवनेस की बात करेंगे. जो स्टेक होल्डर्स हैं आप उनका ओपिनियन नहीं कंसिडर करते. अ मॉरल कंपस कैन हेल्प डिटरमाइन वेदर अ डिसीजन इज एथिकल और not. If a manager can answer yes to the following questions, the decision is ethically acceptable within the domain of that organization. So let's try to understand those questions. Does my decision fall within the accepted values or standards that typically apply in the organizational environment? So within the context of an organization, जो आप decision लेने जा रहे, जो guidelines organization ने set किए हैं, क्या वो उनके साथ aligned है या उनको negate कर रहा है? Am I willing to see the decision communicated to all the stakeholders which will be directly or indirectly affected by your decision? Would the people with whom I have significant personal relationships approve of the decision you have?
तो ये 3 सवालात के अगर जवाब यस में आपको मिल रहे हैं तो फिर सपोजली आप एथिकल बिहेवियर और एथिक्स की बेस पे डिसीजंस ले रहे हैं. So there are 5-step approach है जी decision making की, जिसको आप फॉलो कर सकते हैं. How does decision affect stakeholders? अब इसके अंदर डायरेक्ट स्टेक होल्डर्स भी हैं और इनडायरेक्ट भी है. जो भी आप डिसीजन लेंगे वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसको इम्पैक्ट करेगा. मे बी आप टर्मिनेशन की बात कर रहे हैं, मे बी आप फाइनेंशियल कट्स की बात कर रहे हैं, मे बी आप लोगों को जॉब से निकालने की बात कर रहे हैं. तो इसका इम्पैक्ट लोगों पर क्या आएगा? You have to understand it. The individual or groups who have an interest or stake or claim in the actions and overall performance of an organization or a company. इसमें आपके internal stakeholders भी हैं, external stakeholders भी हैं, इसमें आपके pressure groups हैं, NGOs हैं, government entities हैं, your competition is there, your suppliers हैं. तो ये सारे के सारे आपके डिसीजन से इम्पैक्ट होंगे. तो इंटरनल स्टेक होल्डर्स के हैं कि आपकी वर्कफोर्स है, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं एंड स्टॉक होल्डर्स हैं. एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स में आपके पास इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स हु हैव सम क्लेम on a firm such as your customers, your suppliers and the unions they belong to. Managers need to determine whether a proposed decision would violate the fundamental rights of any stakeholders. So you have to be very careful कि जो basic universal rights of a group and individual में आपके decision की वजह से कहीं वो तो violate नहीं हो रहा है. And then you have to establish the moral intent for the decisions you have took. And that is, business must resolve to place moral concerns ahead of other concerns. In cases where either the fundamental rights of stakeholders or key moral principles have been violated. तो forget about कि आपने protect करनी है जॉब या किसी को penalize नहीं करना. जहाँ पे morals पे question आ गया तो you have to respect that first. Company should then engage in ethical behavior, and lastly the business must audit its decisions. अब आप एक इंटरनल ऑडिट कर लेते हैं फाइनेंशियल का तो उसकी एक अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन उसको सेकंड करने के लिए यू आर सपोज टू गो फॉर एक्सटर्नल ऑडिटर्स, एंड दोज एक्सटर्नल ऑडिटर्स शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय और इमिटेटेड बाय योर ऑर्गेनाइजेशन इन any step of the process, reviewing them to make sure that they are consistent with ethical principles. So, or you can appoint the ethical officers within your organization to encourage ethical behavior. In a business, a number of firms now have ethics officers. These ethical officers ensure that employees are trained to be ethically aware. उनको educate किया जाए, train किया जाए through workshops, through training seminars, through interactive sessions. इस ऑफिस का काम ये है कि वर्कफोर्स जो आपकी है, जो टीम है, उसको पहले एजुकेट करें, ट्रेन करें, प्रैक्टिस करें विद रेफरेंस टू एथिक्स. फिर एथिकल कंसिडरेशंस एंटर डिसीजन मेकिंग फेजेस, उसके अंदर भी आप इसको इंक्लूड करते हैं और कंपनी का कोड ऑफ एथिक जो है उसको फॉलो करने की श्योरिटी ये एथिक ऑफिसर्स इंश्योर करते हैं. लास्ट एलिमेंट जो एक मैनेजर को फेस करना पड़ सकता है, दैट इज मॉरल करेज. So within the domain of an international business or organization, employees may need significant moral courage. That is to report, managers needs to be able to walk away from decisions that are profitable for the organization but unethical in nature. And employees needs to be able to say no to actions that are unethical. तो अगर आपके बॉस आपका किसी अनएथिकल बिहेवियर के लिए इनकरेज कर रहा है या फोर्स कर रहा है तो यू शुड हैव द मॉरल कंपास और इनकरेजमेंट कि आप उसको सिंपली इनकार कर दें. सो लेट्स ट्राई टू समराइज इट. दिस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, international business should strive to hire and promote people based on ethical considerations as well as other metrics of performance. Then establish an ethical culture within the organization, appoint ethics officers and create an environment that facilitates moral courage. So it is important to recognize that not all ethical dilemmas have a clear and obvious solutions. तो वही जो स्टार्ट ऑफ लेक्चर में बात की थी कि जहाँ पे डिलेमा आएगा
आपने दो डिसीजंस के दोनों के प्रोज एंड कॉन्स को स्टडी करके जब आप डिसीजन लोगे तो वो इतनी क्लियर पिक्चर आपके पास नहीं होगी जब while you are deciding, but after implementation of those decisions फिर आपके पास concrete information आएगी, outcomes आएंगे आपके decisions के। I will stop this lecture here और इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी interactive session में। Till then, अल्लाह हाफिज़।